Good evening to all. With the new session of spoken English and competitive grammar, in which we will discuss in the first session of basic grammar, and in the second session we will discuss about advanced, where individually we will take the topic. So we have a minute to connect. So join me. फटाफट से सारे लोग ज्वाइन कर लीजिए. अगेन I'm available with the new session. So जितने सारे लोग हैं जल्दी से फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए. गुड इवनिंग टू ऑल. 1 मिनट का टाइम है हम लोगों के पास, ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास डिस्कस करेंगे. हेलो, जितने सारे लोग हैं फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए. एवरीवन. ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द क्लास. चलिए, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे, कल जो हम लोग डिस्कस किए थे उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग. राइट. ओके, सो लेट्स द सेशन गेट स्टार्टेड. चलिए, सी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का बैच स्टार्ट हुआ है मैथमेटिक्स का, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और उसका जो फी है सिर्फ 499 है. तो आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. इसका जो क्लास टाइमिंग है वो 3 बजे का है दोपहर में, और एक है 7:30 बजे का जो हम लोग मॉक करवाते हैं. तो मॉक तो वो होता ही रहेगा. पिछला 2 दिन से हम नहीं ले रहे क्योंकि वो क्लास ही लेट से ऑफ हो रहा है, तो वो छूट जा रहा है. ठीक है ना. ये आप जानते हैं कि अभी आपका वैकेंसी आया हुआ है शॉर्ट हैंड का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ स्किल एंड लर्निंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज, मैं बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारे कोर्सेज, दीज आर द वायरल कोर्सेज व्हिच आर रिक्वायर्ड नाउअडेज फॉर ईच एंड एवरी वन, बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, सो इट इज आल्सो रिक्वायर्ड. नेक्स्ट इज व्हाट, ये हमारे जो इन जनरल कोर्सेज हैं दैट हेल्प्स यू टू बी अ टेक्निकल हैंड. तो वहां पे ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है. अगर आप जनरल क्लैरिकल जॉब के लिए करना चाहें तो डीसीए, टीटीपी, टैली, टाइपिंग, डीसीए कर सकते हैं. चलो, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है, देखो अभी ये रिसेंटली बैच स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पे टाइप करने वाले ने इसको गड़बड़ा दिया है. ये हम लोग का होगा 1 सितंबर को, 11 सितंबर को नहीं होगा. ये क्या होगा, 1 सितंबर को होगा. 1 सितंबर से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आपके मॉर्निंग में 7:30 बजे, एक 9 बजे, एक 11:30 बजे, शाम को 5 बजे, 6 बजे एंड 9 बजे. ये तो चल ही रहा है, ये तो आपका चल रहा है. तो ये सारे के सारे बैचेस हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. चलो नेक्स्ट आ जाओ. हाँ, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले यहाँ से. देखो,
Today's class is going to be started from the daily spoken tips, right? डेली स्पोकन टिप्स जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंप्लेन होता है, डेली क्लासेस में ये सुनने को मिलता है कि सर जानते सब कुछ है, दिमाग में आ सब कुछ रहा है, लेकिन बोला कैसे जाए, राइट? क्योंकि फिर जब बोलने की बारी आती है तो बोल ही नहीं सकते हैं। तो कुछ बेसिक स्टेप्स आप फॉलो करके देखो, ट्राई करो, डेफिनेटली इट विल वर्क। पहला क्या है? प्रैक्टिस। बेसिक प्रैक्टिस करो आप। बेसिक प्रैक्टिस करने से क्या मतलब है कि जितने सारे टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं, जितने सारे टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसको आप थोड़ा एक दो बार देख लिया करो। जैसे मान लो कि हमने कोई भी छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया है, कोई भी एक छोटा सा टॉपिक है, जैसे मान लो कि आप डूडल्स ही डिस्कस कर लिए हो, राइट? अब इससे रिलेटेड आप सेंटेंस प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है डूडल्स का हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, नो नॉट एट ऑल। मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग, सो स्पीकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट? सेंटेंसेस बोलो ना, जैसे एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप, डू यू डू योर वर्क और नॉट, डू यू डू योर वर्क एट टाइम और नॉट, डू यू गो टू कॉलेज और नॉट, डू यू गो टू मार्केट और नॉट, डू यू बाय वेजिटेबल और नॉट, do you do your essential work or not, who does your everyday's work in your home, do you sweep and mop, do you give the helping hand, like that। ये जितने सारे हमने सेंटेंसेस बोले, छोटे छोटे जो सेंटेंसेस थे, ये बेसिक स्ट्रक्चर्स को इंप्रूव करेगा, स्ट्रांग बनाएगा, एंड you will make your conversation strong while having the conversation with somebody else if you are practicing it again and again। अगर आप every day practice कर रहे हो, इस तरह से छोटे छोटे sentences आप बोलते जा रहे हैं, so somewhere it will open your mouth to have the further conversation and the strong conversation। आप छोटी छोटी sentences को ही बोलेंगे regular basis पे, तो एक strong practice में आएगा और आप जारी रख पाएंगे। नेक्स्ट जो है, अगर आप इस तरह का कोई काम कर रहे हैं अपने रूम में, तो मेक श्योर दैट नोबडी शुड बी अराउंड यू। आप ये कंफर्म कर लो कि आपके आसपास कोई नहीं होने चाहिए। पहला चीज, क्यों? क्योंकि अगर कोई आसपास रहेगा तो थोड़ा आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, कोई सामने वाला सुनेगा, किसी के ऊपर आपका ध्यान जाएगा, कोई हंसेगा, सो यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड एट दैट टाइम। वन मोर थिंग, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और कोई आसपास नहीं होता है, तो आप ओपन होके बोलते हैं, अपने साथ आप ओपन होके बातें करते हैं। लेकिन अगर कोई आसपास होता है, सो यू विल बी समवेयर रेस्ट्रिक्टेड, कहीं ना कहीं आप रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। सो फर्स्ट इज practice the basic thing whatever you have studied। second is make sure nobody should be around you। third is what? choose a random topic which you can discuss or which you are about to discuss, right? कोई भी एक रैंडम टॉपिक, जैसे मान लो बेड पे लेटे हुए, लेटे लेटे फैन मुझे दिख गया, तो मैंने स्टार्ट करना, बोलना स्टार्ट किया फैन के ऊपर कि कितना बोल सकते हैं हम। अपना एक टारगेट बना लो। व्हाट इज द टारगेट? एटलीस्ट 2 मिनट, कम से कम 2 मिनट का टारगेट होना चाहिए। एटलीस्ट 2 मिनट एवरी डे इन योर कॉन्वर्सेशन। कुछ भी जो सामने दिख जाए उसी को बोलना स्टार्ट। दिस इज रिस्ट वॉच, नाउ स्टार्ट स्पीकिंग। दिस इज सिक्योरिटी थ्रेड, नाउ स्टार्ट स्पीकिंग। दिस इज मार्कर, स्टार्ट स्पीकिंग। दिस इज रिमोट इन योर हैंड, स्टार्ट स्पीकिंग, राइट? तो इस तरह से जितना कुछ भी नजर के सामने आ रहा बोलना स्टार्ट करो। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव द मच नॉलेज ऑन द टेकन टॉपिक। जो टॉपिक आप ले रहे हो उस पर अलग से कुछ नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। जो दिमाग में आ रहा है जस्ट डिलीवर इट, बिकॉज स्पीकिंग इज एवरीथिंग फॉर यू एट दैट पर्टिकुलर टाइम, right? So the first, practice your basic topic. Second, make sure nobody should be around you. Third, if you start speaking on a random topic, at least speak 2 minutes, right? कम से कम 2 मिनट होना ही चाहिए। Either it is wrong or right, कम से कम 2 मिनट होना ही चाहिए, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। क्वेश्चन आएगा कि सर गलत हो मतलब क्या बता रहे हैं आप? तो गलत हो इन द सेंस ना, इनिशियली गलत होगा ही होगा, वो आप लिख के रखो। 100% करेक्ट करने का सोचोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आप बोल नहीं पाओगे, डिलीवर नहीं कर पाओगे स्पीचेस, तो गलत होने दो। वंस इट विल बी इन द प्रैक्टिस एंड फ्लुएंसी, यू स्टार्ट मेकिंग करेक्ट योर सेंटेंसेस, उसके बाद आप अपने सेंटेंस को करेक्ट करो। चलो, okay, so tips has been cleared, now follow it every single day। चलो, सबको एक बार फिर से गुड इवनिंग है, सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट द सेशन। इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू हैव द डेली स्पोकन वर्ड्स। आज की क्लासेस में हम लोग कुछ डेली स्पोकन वर्ड्स का यूज करेंगे, जिसमें हमने एक टॉपिक ले रखा है, उस टॉपिक पे ही हम लोग बात करेंगे, जिसमें हमने एक टॉपिक ले रखा है दैट इज कॉल्ड मैनर।
दैट इज कॉल्ड मैनर। ठीक है ना। आज इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग सेंटेंसेस डिलीवर करेंगे। आज के जो टॉपिक होगा मैनर। अब देखो जब हम मैनर की बातें करते हैं ना, तो एक होता है वेल मैनर्ड। क्या होता है? एक होता है वेल मैनर्ड, एक होता है वेल मैनर्ड, और दूसरा होता है इल मैनर्ड। क्या होता है? एक होता है वेल मैनर्ड, दूसरा होता है इल मैनर्ड, राइट। The first is called well-mannered, second is called ill-mannered. Well-mannered means जो अच्छे से बिहेव करे। Well-mannered means जिसे पता हो कि कब कहाँ क्या बोलना है। Well-mannered means वो समझ सके कि आप किस सिचुएशन में हो। Well-mannered means उसको पता हो कि किसको कितना रेस्पेक्ट देना है। Well-mannered means उसे पता हो कि कहाँ पे रिप्लाई करना है, कहाँ पे चुप रहना है। Ill-mannered just make it opposite, पूरा का पूरा अपोजिट कर लो, सारा का सारा इल मैनर्ड होगा। लाइक वेल मैनर्ड और इल मैनर्ड से रिलेटेड मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं। जैसे मान लो कि क्लास में जब टीचर आते हैं तो कुछ बच्चे खड़े होते हैं, कुछ बच्चे खड़े नहीं होते। उनमें से जो अनइंटेंशनली खड़े नहीं हो पाते, जैसे मान लो कि आगे पीछे देख रहे हैं, ठीक है, या फिर कहीं वो किसी चीज में बिजी है, उनको पता ही नहीं चला कि टीचर आ चुके हैं, तो खड़ा नहीं हो पाया, तो वो काउंटेड नहीं है। बट जिन्होंने देखा, जिनके सामने ये चीज एक्टिविटी हो रही है, और अगर वो फिर भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है? इल मैनर्ड। ठीक है। तो इस तरह के जो इंसान होते हैं, इस तरह से इंसान होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? इल मैनर्ड बोला जाता है, राइट। सो हम लोग इल मैनर्ड से ही रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस लेंगे, राइट। एंड हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ सेंटेंसेस को इन अ कॉन्वर्सेशन। ठीक है ना। जैसे 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 जो लोग ज्यादा बातें करते हैं, आप मुझे बताते चलना, जो लोग ज्यादा बातें करते हैं, ज्यादा बातें करने वाले, ज्यादा बातें करने वाले, व्हाट इज कॉल्ड इट इन इंग्लिश? ज्यादा बातें करने वालों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जो ज्यादा बातें करते हैं उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एक तो टॉकेटिव होते हैं, और दूसरे चैटर बॉक्स होते हैं। एक नंबर वन टॉकेटिव होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? चैटर बॉक्स। तो अगर कोई इंसान है जो सभ्य है, कोई जेंटलमैन है, कोई वेल सिविलाइज्ड है, राइट, और फिर भी अगर वो ज्यादा बातें करते हैं, सो दे आर टॉकेटिव, राइट। राहुल इज अ जेंटलमैन गाय एंड ही इज टॉकेटिव। राहुल क्या है? एक जेंटलमैन गाय है और वो टॉकेटिव है। बट रोहन इज अ चैटर बॉक्स, he don't even know that where he needs to speak and what does he need to speak। उसको पता भी नहीं है कि कहाँ पे क्या बोलना है और कैसे बोलना है, right। So that is called what? Chatter box for ill mannered and talkative for well mannered, right। Okay, next is what? Next, अगर मान लो कि अगर मैंने क्लास की बातें ली है, क्लास में आप ज्यादा बदमाशियां कर रहे हैं, राइट, आप कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो आपके बैचमेट्स के साथ साथ किसी को भी पसंद नहीं आ रहे हैं, सो डेफिनेटली इट इज नॉट अ गुड हैबिट। सो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर बाय द वे आपका नाम काट दिया जाए, अगर आपका नाम काट दिया जाए, अगर आपका नाम काट दिया जाए, तो नाम काटना को क्या बोलेंगे? जल्दी से बता दो आप। if your name is removed from the list where you are, then what is called it in English? इसको बोलेंगे क्या हम लोग? इसको बोलेंगे क्या? जल्दी से बताओ आप मुझे। इसको क्या बोलेंगे? स्ट्राइक ऑफ। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? स्ट्राइक ऑफ, राइट। द टीचर स्ट्रोक ऑफ योर नेम, द टीचर stroke off your name from the register after observing your bad habits, after observing that you are a ill mannered student। तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्राइक ऑफ। स्ट्राइक ऑफ मतलब नाम काटना, राइट। सेकेंड फॉर्म में ये क्या हो जाएगा? स्ट्रोक ऑफ। द टीचर stroke off what? Your name, stroke off your name from the list। ओके,
चलो नेक्स्ट जैसे किसी की आदतें हैं सुबह भोर में जग जाना, भोर में जग जाना, भोर में जग जाना। भोर में जग जाना को क्या बोलेंगे आप जानते हो, हमने आपको बता रखा है। भोर में जग जाना को क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। ये एक अच्छा हैबिट है या फिर ये एक खराब हैबिट है? आप जगते हैं भोर में? इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टास्क एवर टू वेक अप भोर में। बताओ इंग्लिश में जल्दी से, आप क्या बोलोगे, फटाफट से बोलो। भोर में जग जाना को क्या बोलेंगे? वेक अप एट डाउन। क्या बोलेंगे आप? वेक अप एट डाउन, वेक अप एट डाउन। वेक अप एट डाउन कहने का मतलब भोर में जग जाना, राइट? सो एवरी डे, हर सुबह वो भोर में जगता है, हर दिन वो भोर में जग जाता है, हर दिन वो भोर में जगता है। तो कैसे बोलेंगे हम? एवरी डे ही वेक्स अप एट डाउन एंड स्टडी फॉर 2 आवर्स। हर दिन वो भोर में जगता है और 2 घंटे की पढ़ाई करता है। एवरी डे ही वेक्स अप एट डाउन एंड स्टडी फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट व्हाट इज कॉल्ड आइडल। आप जानते हैं आइडल किसको बोलते हैं? अच्छा, ये आइडल होता है, एक ये आइडियल होता है। आप मुझे बताओ कि किसको बोलते हैं आइडल? टेल मी, किसको बोलते हैं आइडल? किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? जल्दी से बताओ। एक्चुअली ये दोनों सेम ही चीजें हैं, एक्चुअली ये दोनों सेम ही चीजें हैं। जो कन्वेंसिंग हो, जो आपके हिसाब से क्या हो, कन्वेंसिंग हो, जो कन्वेंसिंग हो, जो आपके लिए सही हो। आइडल, जैसे आइडल टाइम, राइट? आइडल एज, आइडल प्रोफेशन, आइडल सैलरी, राइट? जैसे आपको एक आइडल सैलरी दिया जाता है, सारा चीज ऑब्जर्व करके दिया जाता है कि इतना में आपका खर्चा चल जाएगा, दैट इज कॉल्ड आइडल सैलरी। बट उसके अलावा आपको लग रहा है कि ये ज्यादा है, तो फिर वो हैंडसम हो जाता है, आइडल सैलरी। नेक्स्ट, मान लीजिए आपसे गलतियां होती हैं और आपको बार बार माफ किया जा रहा है। आपसे गलतियां होती हैं और आपको माफ किया जा रहा है। माफ करना को क्या बोलेंगे आप? जल्दी से बता दो फटाफट से। माफ करना इज कॉल्ड व्हाट? माफ करना को आप बोलेंगे क्या? फॉरगिव, फॉरगिव। माफ करना को आप क्या बोलेंगे? फॉरगिव। बट अगर ये अगेन एंड अगेन हो रहा है, अगर ये अगेन एंड अगेन हो रहा है, तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? प्लीड होते हैं, प्लीड। जिसको आप प्लीज बोलते हैं, वो आप हर जगह पे अगर आप प्लीज हो रहे हैं, हर जगह पे अगर आप प्लीज कर रहे हैं, इट मीन्स दैट समवेयर देयर इज अ बैड हैबिट इन यू, दैट इज आल्सो नोन एज इल मैनर्ड। जैसे मैंने जानबूझ के कोई गलती की एंड मैं अगेन एंड अगेन प्लीज 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 बोल के मैं अपना रेपुटेशन खराब कर रहा हूं, दैट इज आल्सो कॉल्ड इल मैनर। आप किसी को देखे होंगे, कुछ भी हुआ सॉरी, कुछ भी हुआ सॉरी, कुछ भी हुआ सॉरी, right? They don't even realize. So you don't have to say sorry again and again, and don't have to say please again and again, right? Once it is required, then only you have to speak about. Next is what? Next is what? I was trying to say idol of mercy. Idol of mercy. Idol of mercy. एक वेल मैनर्ड इंसान का सबसे बड़ा पहचान क्या होता है? He must be the idol of mercy. क्या होता है आइडल ऑफ मर्सी? आप मुझे बताओ। व्हाट इज कॉल्ड आइडल ऑफ मर्सी? व्हाट इज कॉल्ड आइडल ऑफ मर्सी? दयावान। व्हाट इज कॉल्ड आइडल ऑफ मर्सी? दयावान। इसी को हम लोग स्टैच्यू ऑफ मर्सी ही बोलते हैं, स्टैच्यू ऑफ मर्सी। इसको क्या बोलेंगे? दया की मूर्ति। इसको क्या बोलेंगे? दया की मूर्ति, राइट? स्टैच्यू ऑफ मर्सी। नेक्स्ट यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आप एक हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लो आपकी कोई मदद कर देता है, अनकंडीशनल हेल्प कर देता है आपकी। जैसे आपका बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, आप रास्ते किनारे हैं एंड यू थॉट दैट आई डोंट नीड टू आस्क फ्रॉम समबडी एल्स एंड you were started walking,
So in that particular case, a boy came and started asking कि सर पेट्रोल खत्म हो गया, चलो मैं आपको मैं थोड़ा सा दे देता हूँ, राइट। तो आप क्या बोलेंगे, बता दो आप मुझे, आप क्या बोलेंगे उसको? इट इज ऑब्वियस कि आप उनको क्या बोलेंगे? थैंक यू। आप उनको क्या बोलेंगे? थैंक्स, थैंक्स फॉर हेल्प, ठीक है ना। लेकिन अगर आप रियल में ये फील कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे आप? थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आपने फील किया और ये बोल दिया, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। बट एक ऐसा है जिसका कॉन्सेप्ट ही है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, राइट। अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ वो है इंसान, तो फिर जैसे मान लो उसको जरूरत पड़ी, उसकी मदद हो गई, राइट। लेकिन सेम इंसान जिसने मदद की वो कभी प्रॉब्लम में पड़ गया और ये सामने वाला हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये क्या सोच के कि अपना काम बनता और भाड़ में जाओ जनता। इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, फटाफट से बता दो? मैन विद पैसिव हार्ट, मैन विद पैसिव हार्ट, ठीक है ना। मैन विद पैसिव हार्ट, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। या फिर हम बोल सकते हैं nowadays people are being passive। आजकल लोग क्या हो रहे हैं? पैसिव हो रहे हैं। आजकल लोग क्या हो रहे हैं? मतलबी हो रहे हैं, राइट। आजकल लोग क्या हो रहे हैं? मतलबी हो रहे हैं। सो दीज वर सम स्पोकन वर्ड व्हिच इज स्पोकन एवरी सिंगल डे, in our day-to-day conversation. If it will be practiced again and again, then it will make your conversation more strong and smooth while speaking। चलो, ये तो था स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस और द वर्ड जो आप देख रहे थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वो सेशन जहां पे हम लोग एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एवरी सिंगल ग्रामेटिकल एरर। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वी आर स्टडिंग प्रोनाउन। हम लोग इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं प्रोनाउन। एंड प्रोनाउन होता क्या है आप जानते हैं? क्या होता है प्रोनाउन? आपको पता है, जो नाउन प्रो बन जाए वो प्रोनाउन। क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा कैसे बोल दिए आप? प्रोनाउन ऐसा कोई वर्ड जो किसी नाउन के बदले में आ जाए, ये आप जानते हैं। लाइक क्या? he, like she, like it, like you, like they, ठीक है ना, like them, like yours। ऐसा कोई वर्ड जो किसी नाउन के बदले में आ जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोनाउन बोलेंगे। एंड we already have known that what is called personal pronoun। ऐसा कोई प्रोनाउन जो पर्सनली अटैच हो दो केसेस के अंदर, एक हो सब्जेक्ट वाले केस में, दूसरे हो ऑब्जेक्ट वाले केस में। सब्जेक्ट किसको, इन शॉर्ट अगर समझो आप, सब्जेक्ट किसको बोलेंगे? जो सेंटेंस के पहले आ जाए उसको सब्जेक्ट, जो सेंटेंस के लास्ट में आ जाए उसको ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो, कल के क्लासेस में हमने आपको ये भी बताया था कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। सो पर्सनल प्रोनाउन इज ओवर, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हमने आपको बताया था कि जो नाउन के जस्ट पहले कोई वर्ड आए, नाउन के जस्ट पहले कोई वर्ड आए जो देखने में लगे कि प्रोनाउन है, वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है। और अगर कोई इंडिविजुअल आए तो उसको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। जैसे हमने लिया योर और एक हमने लिया योर्स, राइट। तो योर के बाद आप जानते हैं कि ये वेल अंडरस्टूड है, मुझे कुछ न कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो योर बुक हो गया, तो योर यहाँ पे क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। बट योर्स इट इज कंप्लीटली पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना। चलो, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
Today we are going to discuss about reflexive pronoun. अब reflexive pronoun होता क्या है? Reflexive pronoun होता है कि जो किसी चीज को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। क्या करे? रिफ्लेक्ट करे। जो क्या करे? रिफ्लेक्ट करे। किसको? जो वर्ड किसी प्रोनाउन को रिफ्लेक्ट करे उसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये क्या होता है भाई? जो वर्ड किसी प्रोनाउन को रिफ्लेक्ट करे उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल हमने बोला माई सेल्फ, आपने सुना होगा। एग्जाम्पल हमने क्या बोला? माई सेल्फ। ठीक है, चलो। तो उसी तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जितने सारे हमारे सब्जेक्टिव केस हैं, जैसे आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है, दे है, ये एक सिक्वेंशियल मैनर में आपको बताया गया है। क्यों? हमने आपको बोला था, पर्सन बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तीनों ही पर्सन के केस में प्लूरल और सिंगुलर होते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल। सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई आता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी आता है। इस केस में इसका जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो मी बनेगा, अश बनेगा। एंड इसी से रिलेटेड आप देखोगे तो इसका जो रिफ्लेक्सिव केस होगा उसको क्या बोलेंगे? माई सेल्फ। सो क्या बोलेंगे? माई सेल्फ। अगर अश हो गया तो आर सेल्फ, यू हो गया तो योर सेल्फ। ये क्या है? माई सेल्फ सिंगुलर के लिए, आर सेल्फ प्लूरल के लिए, योर सेल्फ सिंगुलर के लिए, योर सेल्फ प्लूरल के लिए। सिमिलरली हिमसेल्फ सिंगुलर के लिए एंड हर सेल्फ सिंगुलर के लिए, इट्स सिंगुलर के लिए इटसेल्फ एंड देमसेल्व्स प्लूरल के लिए। राइट, यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। राइट, चलो। इसमें हमने ये भी देखा कि ये तो कंप्लीट हो ही चुका है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों के दोनों क्या है? ये पर्सनल है। बट इसके साथ जो खुद का बन के आ रहा है, खुद से जिसको बोलते हैं माई सेल्फ, खुद से, आर सेल्वेज, हम लोगों के द्वारा खुद से, आर सेल्वेज। तो ये सब के सब क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ये सब के सब क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहां तक आई होप आपका क्लियर हो चुका है। तो अगर ये क्लियर हो चुका है तो फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ना समझने के लिए। चलो, सो लेट्स हैव एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं कि इसमें कुछ गलती है क्या। आई हिट माई सेल्फ। हमने एक एग्जांपल लिया, हमने बोला आई हिट माई सेल्फ। क्या इसमें कुछ गलत है? आप बता दो मुझे। मैंने क्या कर दिया? मैंने खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया, मैंने खुद को ही मार लिया। ठीक है ना? तो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? मुझे। मैंने खुद को नुकसान पहुंचा लिया। सो इट इज कॉल्ड आइडेंटिफाई करते चलो, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलो, आई कौन सा प्रोनाउन है बता दो आप मुझे। इट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। हिट क्या है? वर्ब। ओके, नेक्स्ट इज, अगला देखो, नेक्स्ट आ जाओ। आई फेल ओवर एंड हर्ट माई सेल्फ। आई फेल ओवर एंड हर्ट माई सेल्फ। जल्दी बता दो। आई फेल ओवर एंड हर्ट माई सेल्फ। इसमें कुछ गलत है, इसको ब्रेक करो आप और मुझे बताओ कि ये कौन सा क्या क्या टर्म यूज हुआ है इसमें। ब्रेक करो आप और बताओ मुझे। ठीक है ना? ये जो है ये क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है। उसी तरह से ये क्या है? 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 जल्दी से बता दो फटाफट से, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। डू इट फास्ट, टेल मी। जल्दी जल्दी मैसेज करो, फटाफट से बताओ मुझे कि क्या है ये। चलिए, तो मिला क्या? फेल क्या है? एक्शन, जिसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। कौन सा फॉर्म में? सेकंड फॉर्म में। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्या है? ओवर। ओवर क्या है? प्रेप। एंड क्या है? कनेक्टर, जिसको हम लोग कंजंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। हर्ट क्या है? वर्ब। कौन सा फॉर्म में? सेकंड फॉर्म में। माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल करो, अगला। वुड यू लाइक टू पावर योरसेल्फ? वुड यू लाइक टू पावर योरसेल्फ ड्रिंक? इसमें बताओ कि एरर क्या है। इसमें आप बताइए कि एरर क्या है, जल्दी से बताइए। टेल मी, क्या एरर है इसमें? इसमें एरर क्या है, आप मुझे बताएंगे? हाँ, वुड यू लाइक टू पावर योरसेल्फ ड्रिंक? अब यहां पे रिफ्लेक्ट किसको कर रहा है? रिफ्लेक्शन का यहां पे जरूरत क्या है? ठीक है, तो अब मैं करूंगा क्या? अब मैं करूंगा क्या कि यहाँ पे तो हमने बता रखा है कि जब भी कोई नाउन हो तो उसके पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, मतलब सेल्फ हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब इसका मीनिंग क्या हो गया? वुड यू लाइक टू पावर योर ड्रिंक? क्या आप अपना ड्रिंक लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू पावर योर ड्रिंक? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, अगला, अगला करो आप, ये आपके लिए है। डू इट फास्ट, जल्दी से करिए। He had a suitcase beside him. He had a suitcase beside him. He had a suitcase beside him. टू के बाद आईएनजी किसमें? टू के बाद आईएनजी, डूइंग, पावरिंग। Would you like to powering yourself drink? नहीं नहीं, गलत। Would you like to power your drink? चलो नेक्स्ट वाला बता दो। He had a suitcase beside him. चलिए जल्दी से बताइए आप मुझे, कैसे बोलेंगे? क्या गलत है इसमें? He had a suitcase, उसके पास एक सूटकेस है, उसी के जस्ट बगल में, उसी के जस्ट बगल में, उसके खुद के बगल में। He had a suitcase beside himself. Beside himself. He had a suitcase previous. किसमें 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 किसमें? I fell over and hurt myself. कौन सा एग्जाम्पल? चलो ओके। Now good, himself. Next आ जाओ। He had a suitcase beside. ये आपके लिए इतना सारा जो एग्जाम्पल है ये आपके लिए है, ये आप करोगे। दिस इज टास्क, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है अडेप्ट, एक वर्ड दिया हुआ अडॉप्ट, एक वर्ड दिया हुआ अडेप्ट। आपको पता है क्या क्या होता है ये? अडॉप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट, क्या होता है ये? आप जानते हैं इसके बारे में? बताइए जल्दी से, क्या होता है? अडॉप्ट का मतलब, अडॉप्ट तो सबको पता होगा, अडॉप्ट तो सबको पता होगा, गोद लेना। एवरीवन नो अबाउट अडॉप्ट, एवरीवन नोज, गोद लेना। अडैप्ट क्या होता है? अडैप्ट क्या होता है? सो ड्रिंकिंग। नहीं नहीं, ठीक है, यू ड्रिंक, नॉट ड्रिंकिंग। नाउ टेल मी, अडैप्ट क्या होता है? अडैप्ट इज व्हाट? अडैप्ट किसी चीज के अंदर ढल जाना। Are we adopting?
Are we adopting the Western culture or are we adapting the Western culture? Adaptation क्या होता है? Adapt is called किसी चीज में निपुण होना, निपुण होना, राइट. अडैप्ट ढल जाना, अडॉप्ट गोद ले लेना, अडेप्ट किसी चीज में निपुण होना, राइट. तो इस तरह के वर्ड हैं जो दिखते सेम है बट अलग अलग मीनिंग रिलीज करते हैं. सो वी हैव some different sentences which you have to complete and tell me that where it is required to put reflexive pronoun and where it is not. I can't put me in danger for you. यहाँ पे कहीं पे रिफ्लेक्सिव लगेगा. हमने पूछा he adapted him to the harsh climate. He adapted him to the harsh climate of Manali. इसमें क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा क्या? अगर लगेगा तो आप मुझे बताओ. Be careful with your knife. Be careful with knife. You might cut yourself. You might cut yourself. चेक करो इसमें लगेगा क्या? लगेगा इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा तो फिर क्या लगेगा? नाउ टेल मी. नेक्स्ट इज she had few friends with her. इसमें कहीं लगेगा क्या रिफ्लेक्सिव? अब जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो वैसे वैसे आपका एरर बढ़ते जाएगा. जैसे कि अब हम इसमें पर्सनल भी यूज कर सकते हैं, पर्सनल भी यूज कर सकते हैं. अब हम इसमें पजेसिव भी यूज कर सकते हैं और अब हम इसमें रिफ्लेक्सिव भी यूज कर सकते हैं. पर्सनल जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो, पजेसिव जो क्या करे, जो रिलेशन बताए, जो क्लोज रिलेशन बताए, रिफ्लेक्सिव जो खुद का रिफ्लेक्शन दे, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, राइट, जो खुद का रिफ्लेक्शन दे. तो ये तीनों के तीनों प्रोनाउन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और इतने सारे सेंटेंसेस में 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं. चारों सेंटेंसेस में यू हैव टू फाइंड आउट दैट वेयर वी कैन यूज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वेयर वी कांट, where we can use the personal pronoun, where we can't, where we can use the possessive pronoun and where we can't, right? Chalo. So here we all have seen a type of pronoun which is called reflexive pronoun. Now the session of basic is also over. I hope you have understood properly what actually the reflexive is. Now it's time to speak, as everyone's motive is to speak, be a good speaker. So how many are ready to be connected to join advanced English where we will discuss on the particular topic? Are you all ready? Are you all ready? Answer me. Good, Lena. Okay. How many are there to speak? जल्दी से बता दीजिए आप मुझे, फटाफट से आंसर कीजिए. We have an interesting topic today to discuss. So how many are there? Now message me. Okay, so wait for 2 minutes, not 2 minutes, 1 minute to connect. So wait for a minute. I'll send you a link and through the link you can join me in advance. So
Okay, now, so okay, so everyone have joined. Is it? Is my voice audible? Okay, so let's have the discussion today on the topic that is argumentative topic, right? And are you all ready? Okay. So today's topic is going to be, today we are going to talk about a very viral topic that is much controversial, and it can be the it can be with the minor differences that how you are recognizing it. The topic is, what is more important, money or education? As we have discussed, and you may have ideas about this, so you can have your argument with your opinion. First of all, let me know, let me make the group that what are you favoring and what are you opposing, what in which side your opinion goes, that are you supporting money is important or are you supporting education is important for you. So first of all, we have the opinion about the topic, and after that we'll start making the argument on the basis of your opinion. Okay, so let's start having the opinion. Who is going to be the first? Already i've shared the link. Now, have you all heard what is more important, money or education, according to you? The first of all, we'll make the side by putting opinion. After that, we will start having the argument on the topic. Right. So let's put the opinion. Everyone, one by one, put the opinion. So first of all, happy. Good evening, sir. Good. Today's topic to what is the money important? बेसिक से स्पोकन करवाइए, 0 से हीरो तक. ओके ओके ओके, बेसिक से ही हो रहा है भाई. हाँ चलिए. रेडी सर? हाँ रेडी. सर money is important. When you have the debate in the group, it is required to greet yourself first of all, like, good evening everyone, today I'm here with the topic that what is more important, money or education. Well, in my point of view, the money is important because again I say, sir. Of course you can. Good evening, sir. Good evening, everyone. I am going to talk about important of money in education. And my opinion to me, money is most money is important is nowadays because if you don't have money,
can do anything in our life, and nobody can no one you ask if you don't have money. And education is most important because we don't don't study. We will not go outside. We will talk to other persons. So this my opinion. For that, but we don't have we can. Okay, done. So money is important according to you, right? Yes, sir. Money is important than education. Next is in the queue. That is Raj. What do you think? What is important, money or education? Good evening, sir. Good evening, everyone. Hmm. Today I have opinion about which is better for me, money or education. So, according to myself, education is better for me because if we have time, then we will definitely use our money in a right way. If we don't have any kind of right like online betting games and scams, so without education, how can this happen? So I think for example, education is better. Education is important better than money. Hmm. Okay. So education is important. Education is much better than money, right? Yes, sir. Okay. Now the next is going to be Brid. Good evening, sir. Good evening, everyone. Today's topic is money is important education. So, according to me, money is very important because without money, not get good education. Because every person should be have more lot of money, then higher will take a higher education. Without the money, not to take a higher education. So money is important, isn't it? Yes, sir. Okay. Next. So let's start having the argument because everyone have put the opinion about the topic. Majorities people are saying that yes, the money is more important comparatively education. So let's ask the first question. We're starting the round of debate that the people who are saying money is more important comparatively education, on what basis are you saying? Behind saying that the money is more important, what are the base? Why not education? Because the entire world is running behind knowledge and you are running behind money. What are the reason? Sir, because because we live in our society, we need money. If we have don't any knowledge, so you can survive. But if you don't have money, you can survive. Nobody ask you how you feel. We everyone seems in our India and lots of state person who have any knowledge, but he has not knowledge and everyone respect themselves. Okay. Anybody else? Yes, sir. Especially when told us that money is important, not money, we don't survive. So, sir, if we go out for any weather, if we don't know, if we don't have right for it, how and we will survive? Because people told us if you have skill, knowledge, you can survive in every condition. But if you have money, you can just buy everything, but you cannot buy happiness. Because money is just kind of like providing you some that you want from you that fulfill your desire that what you want for your life. So one of the things is this. If I talk about education helps us to meet our reducing our
mind. So I think about that, sir. Okay, so education reduce the tension from your mind, not money. Is that? I would say, sir, to be child, we cannot also. What? Please, sir. What are you talking to? Everyone knows about which language it doesn't show it except for yes, we don't have in the our give me I can say this example, sir. Okay. What example you want to put? I want to say, I want to say, Mm-hmm. he's saying right, but I want to say one more thing. Sometimes we see in our country and everywhere, suppose if many people have a good mind, that time he will keep a job and the job are controlled every management and every month. For like CA and like account management, like that person. Because he have a huge money, but he has not, I think according to himself, he is not capable, he is not much knowledge or control every month. Where he will invest, where he will क्या करना? ऐसे तो यूज करना यूज ऑफ मनी हाउ we will use money they what we use CA. Okay. So Next. I would like to say many politicians has no knowledge and they also Many politicians doesn't have the knowledge, but still they are earning money. Yes, right, sir. You say right, but we know all behind politician, every politician, behind every politician, give mind and give idea another person. Okay. don't even also sir from they can see and also anyone. So everyone take the participation and continue speaking. Okay, if you don't have the knowledge, if you don't have the education, how will you earn money? Tell me. As you simply said, the money is more important. Tell me, if you don't have the education, how will you earn money? Sir, I will definitely say, sir, I have more money, I can go anywhere to practice something. And I survive. How will you survive if don't have the way of life? How do you have to live your life? What is the purpose of life if you don't know about? Because all those things comes from education, not from money. Sir, we know, sir, everyone, our India, not every person has knowledge, sir. For they have a lot of money, they go anywhere, and they also they go to our money, sir, and they go to any state, any business started to run, and they have a lot of money, sir. They can also autograph himself. Autograph himself? What are you talking about? They can sign. So, And who are you talking about? That one who is not educated and they are giving the autograph?
Sir, I would say, sir, education is important for everyone. If you know, if you don't do anything in education, you can just talk. You get more into it. Rest of the people also have to speak. One who is favoring money, that the money is more important. Tell me what will be the purpose of life if you are not educated much, if you don't have the knowledge, only you have money. What will be the purpose of life? How do you recognize that? What do you have to do with that money? Sir, we can't buy money everything. Huh? Because sir, we can't buy everything with the using of money because if I talk about our prime minister, they are why they are taking permission from their secretary because he was well educated, highly educated person, and also CA. Why politician putting CA and taking permission from their secretary because of the knowledge because they also have too much money politicians are, but how they use who select educated persons are select to the politician how to use the money according to myself, sir. So I support always education and recently bring about if you have money, you will definitely learn right money. But sir, so it is wrong, very wrong, sir, according to myself. If you are curious about learn to write money, you will definitely learn without money. Money is only part, money is important for those persons who are trying to desire and fulfill their dream. Okay, next. So, according to me, previous speaker said education is important, but in my thinking, political leaders not all educated. They have a lot of money, so he like the prime minister is not well educated, more education, but he has a lot of money and he said vote को ये क्या कहेंगे उसको जीत जाना election. Win the election, win the election. Win the election. So only for reason of money. Now every time saw the news and newspaper and so political leader had a lot of money and such search and catch red-handed. So then come the election, during the election time, all political leader has a lot of money. Say only for money in बांटना उसे क्या कहेंगे? Distribute. Distribute all political leaders distribute money and win the election. So money is very important in our life and education without money not take a good education like in the rural area people have not a good education only all they all teachers are child government because they have not lot of money. Then cities areas people people child all take the education, the higher education like good school and institute because then they this have a lot of money so provide good education. So in my thinking, money is very important. Now I suggest that. Means without money we can't get the good education, isn't it? Sir, right now in our India, if you want to get any government job, you want to try it. And if I have a lot of money, I get the, I give the bribe, sir, to get job, sir. So the bribe is another thing. It is corruption, not education. And the people are taking bribe because people are taking bribe and making illegal money because they have the education, they have the knowledge to get indulge into the corruption. Yes, sir, I want to say here one point. If
So if it will be required, if it will be sufficient knowledge, then only. But you are saying money is important. So what about the knowledge? Sir, in my opinion, now present time like NEET exam, many tickets and the generation people have lot of money so purchase paper. Paper and SST exam also. Oh my God! Money is very important. You are putting allegation on the government on live. That in our rest of life, in our life, first in age of 5 years to 20 to 25 years, Huh. first learning is important. After that, Okay. that's why this process is put in this rule. Hmm. First, we should learn. After that, So it is in the rule. What is new in that? The first we get education, get the degrees, know the process to earn money, and after that we indulge into earning money. Sir, I have lot of money, so I purchase a degree. Like maximum people like to purchase BA degree and BA degree. So money is very important. I have money, so I purchase more degree. And what will you do that degrees? Education and BA, also people purchase like degree. Yes. If you society, what you do in one side. Mm-hmm. It doesn't matter you have no knowledge of any education. Okay. Degree can be purchased, okay, but what about education? How will you purchase the education? Sir, like I have a lot of money, so I like I correct the other exams, so I can know that. But I am giving teacher lot of money, like I purchase teacher. Purchase teacher. Suppose he has lots of money and he crack doesn't get this but he is not capable to work on ground. Hmm. Lack of knowledge. Okay. Yes, sir, I understand. Hmm. You have a lot of money, but you are not able to work on ground. So, what will be the benefit of that education? The right education comes when if our pocket and bank balance is in our pocket and bank we don't have any type of for instance no any money, then right knowledge and right planning comes in our mind. So I support always education and recently mentioned my previous speaker she had too much money. So Okay, you said me if you have money for the platform, if you are for knowledge, but if you have money, so what will you do? How did you how Sir, now budget time I saw people have education but not money and not knowledge, so not take a good job. Only for education and sorry, then people have education, so people only saw the education on degree and not take a good job. So money is very important in that. I have lot of money, so I purchase more degree, and then I am not going to attend the classes also purchase teacher. Give it more money and purchase teachers. I have more knowledge and I have no degree. Anybody else? I agree with her. But sir, he can buy degree, not knowledge. She is saying she can buy teacher also. I give a teacher lot of money, so teacher cannot pay this. I have knowledge.
Sir, many people are This type of mentality increases our mentality. but teacher will not go. They are going to everywhere. People will learn from So what is wrong if she is saying that the teacher can be purchased also? What is wrong? Why a teacher getting us with class teachers and these why they not have any mind of get a good knowledge. Huh? The teacher goes every day in the in the home and teach the student. Because only power of money. I am teaching everyone. I am teaching classes. Hmm. Anything else? many people. Sir, I would say many people have good knowledge and what that people have a good degrees also, but they don't have a money and they don't survive and don't like it to take things. They are survive. They go to work every day and nowadays, sir. Yes, like like but everywhere 2 to 5% exceptional case available in Okay. and negative both sides. But mostly sir 95 above 95 percentage if any people have sufficient knowledge then he can earn free money anywhere. Okay. Sir, also I mentioned one thing. In COVID time, there are lots of million people admitted in the hospital. There are lot of, so why they are not currently exist in this life? Why? Because they don't because they do not listen their doctors' words and conversations. Because I have one example from the years and some example like ministers. Daughter who are very arrogant and he doesn't listen to doctor's word. So there he had too much money, but they don't understand. But they did not listen to the doctor's word. After that, they After that? listen. Fulfill you if you want to believe word. Okay. Please do not Now, this is high time to conclude the topic. After having a lot of argument and after listening your argument, we got the conclusion that earlier people were surviving without existence of money. If you have recalled, if you have seen or observed, in earlier days the people were exchanging the sources, but nowadays the sources has been sold, and it can only be sold if you have the money. Yes, the education works everywhere. Somewhere the money doesn't work, education works. As you given the example of COVID-19, having a lot of money also, the people couldn't be able to save the life of their related ones. But the knowledge, if you have the knowledge, the guidelines which has been displayed and given to the common people, if they have followed strictly, they have been survived in this we can say pandemic. But the people who had the money, a lot of money, are they being arrogant and they did not follow the rule, they didn't even know or tried to follow it, at that moment of time they destroyed their life or the related one's life. In the case, we found that the education, the knowledge gives you the purpose of life, the way of living, but the money buys the things for you whatever is required. In such cases, the money can be helpful providing the sources, not implementing the sources, right? Here we can say both are complementary to one another, but if we'll have to choose one in that particular case, education will always be on the top comparatively money, right? So today this session is going to over. We have done
having the argument on the topic. So today there is enough. Good night to you all. We'll see you in the next class with a different topic. Till then, thank you.